हम लोग उसका साथ नहीं रहेंगे। वो हम क्या करेंगे, वो तो रेजिग्नेशन करेंगे, वो जो करना वो हम करेंगे। मैंने बोला विड्रॉइंग सपोर्ट, क्या बोलता है, क्या लगता है? आप मिनिस्ट्री छोड़ो और आउटसाइड सपोर्ट करके रख दो तो एक ही बात ना। फिर आप कहेंगे क्या हाफ हार्टेड क्यों किया, कितना हुआ नेगोशिएशन, आपको देखे कहेंगे ना। वो तो यही करता है, आप लोगों को फिट कर देता है न्यूज कि यही बोलो। वो मेरे को पता है, मैंने तो बोल दिया जो बोला। क्या आप सुना नहीं? ये विड्रॉइंग सपोर्ट क्या मीन होता है, समझाना चाहिए ना। Good evening and welcome. The big breaking story, the UPA government is in a minority as Mamata Banerjee withdraws support. Let's go across live now to Congress General Secretary. कांग्रेस को हमेशा हमने अपना बहुमूल्य सहयोगी माना है और जो कुछ ममता जी ने आज कहा है उसके बावजूद जब तक कोई अंतिम परिणाम सामने नहीं आता हम उन्हें अपना बहुमूल्य सहयोगी मानते रहेंगे। उन्होंने कुछ बातें कही हैं, कुछ मुद्दे उठाए हैं, निश्चय ही उन पर सरकार से बातचीत होगी और चर्चा होगी। इसके बाद जो नतीजा निकलेगा, जो परिणाम सामने आएगा, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। सर, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं, क्या अभी भी विकल्प, बातचीत का विकल्प खुला है? मैंने जो कुछ कहा उसका अर्थ यही निकलता है कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उस पर निश्चय ही सरकार से बातचीत होगी। लेकिन ये संवाद नहीं है। Well, Mamata Banerjee announcing there just a short while ago that she is withdrawing support from the UPA government. She has said that she cannot stay in this government after the hike in diesel prices and the decision on FDI. Our big question tonight, Mamata's ministers quit. The UPA is now in a minority. Can the government survive? Mamata's decision was announced just a short while ago. This came after a 3-hour meeting between her and Trinamool MPs in Kolkata's town hall. Here's what an angry Mamata said. Interestingly, at the same time as Mamata was meeting her MPs, the Prime Minister and the Finance Minister, Mr. Chidambaram, met in New Delhi. हम लोग उसका साथ नहीं रहेंगे। वो हम क्या करेंगे, वो तो रेजिग्नेशन करेंगे, वो जो करना वो हम करेंगे। मैंने बोला विड्रॉइंग सपोर्ट, क्या बोलता है, क्या लगता है? आप मिनिस्ट्री छोड़ो और आउटसाइड सपोर्ट करके रख दो तो एक ही बात ना। फिर आप कहेंगे क्या हाफ हार्टेड क्यों किया, कितना हुआ नेगोशिएशन, आपको देखे कहेंगे ना। वो तो यही करता है, आप लोगों को फिट कर देता है न्यूज कि यही बोलो। वो मेरे को पता है। Our number one decision, our ministers will go to Delhi on Friday, the Jumma bar. At 3 o'clock, they will submit their resignation to Honorable Prime Minister. आगामी शुक्रवार আমাদের মিনিস্টাররা গিয়ে রেজিগনেশন জমা দেবেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে। 2, আমরা ডিসাইড করেছি আমরা ইউপিএ 2-তে থাকছি না। আমি সরি এই কথা বলবার জন্য, এটা আনফরচুনেট ফর মি টু অ্যানাউন্স অল দিস, বাট আই ওয়েটেড। আমি 3-4 দিন আগেও টাইম দিয়েছিলাম, আপনারা জানেন। আমরা ভেবেছিলাম অন্তত এই সরকার কিছু সিদ্ধান্ত নেবেন, কিন্তু তারা সিদ্ধান্ত নেননি। আমরা চেয়েছিলাম আমরা এই সরকারে থাকি, কিন্তু আমাদের থাকতে দেয়া হলো না। তার কারণ আমরা থাকলে তবে সুযোগ সুবিধা হচ্ছিল না। টু সাপ্রেস দ্য কোল গেট স্টার্টেড দিস FDI গেট। ইজ ইট প্রপার? ইজ ইট দ্য সাপোর্টিং হ্যান্ডস? সো ফর দিস টু ডাইভার্ট দ্য ইস্যু, আমরা বারবার বলেছি কোঅর্ডিনেশন কমিটিতে আলোচনা করুন, মিটিংয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিন, এগুলো করবেন না তাড়াহুড়ো করে। আমরা ইউপিএ সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি ছিলাম, কিন্তু কোনোদিন মিনিমাম সম্মানটুকু আমরা তাদের কাছে পাইনি। সামটাইমস somebody is to build the cat.
somebody has to bell the cat, and Mamta Banerjee has clearly done that. For more, let's go across to, well, the current Urban Development Minister, Shogoto Roy, who won't be a minister anymore come Friday. Mr. Shogoto Roy was with Mamta Banerjee at that meeting this evening. Mr. Shogoto Roy, let's just look at the big picture. Will UPA 2 now fall with the Mamta withdrawal? Let's just look at how the numbers add up, because we know they just won the numbers game in the presidential election. But given here, Mamta Banerjee is out, so that means 19 MPs no longer support the UPA government. The replacements, the two other M's, Mulayam and Mayawati, have already said that all three are united, that they're against FDI. So if there is a vote of confidence on the issue of FDI, this government could well fall. Mr. Shogoto Roy, given that many had expected that Mamta Banerjee may announce withdrawal of ministers but outside support, she hasn't said that. She said we are now out of the UPA, we will not support the government, we will vote on them on issues, and on FDI she will vote against. Is that confirmed? Yes, that is confirmed. That is confirmed. We have withdrawn support to UPA 2. That is final. Do you think this will see the fall of the UPA 2 government, Mr. Shogoto Roy? You all must have talked about it in a 3-hour-long meeting. For me to, that's for not for me to tell, because you are media people, you calculate the numbers. I do not know how the government will manage the numbers. It is their concern. But we have taken a principled stand on some issues, and we have withdrawn support to the UPA 2 government at the centre. On Friday, our 6 ministers will go at 3 p.m. and submit their resignations to the Prime Minister. Mr. Shogoto Roy, you said that the government has taken a principled stand. The question, why wait till Friday? Not the government, our party has the Trinamool has taken a principled stand. Why wait for Friday to resign? Many would say that this means that the door is open for negotiation. Will a financial package emerge for Bengal? Why wait till Friday? You can catch the morning flight from Kolkata to New Delhi. No. The reason is that day after tomorrow, a bandh has been called. So we have to get down on the streets and oppose the bandh. Mamata has also announced her opposition to the bandh. So do you want all of us to be away from Calcutta on the bandh day? You want to help the CPM? We cannot do that. So we have to be on the streets to protest against the bandh and then go to Delhi. So you are absolutely sure there is no room for negotiation at all? What if the centre says we will give a financial package to Bengal? What if the centre says we will roll back the LPG cylinder limit of 6 and we will increase it? That Mamta has in her press conference already spelled out. She said that at least allow the cap to be raised to 12 cylinders, reduce price of diesel by at least ₹3 and remove the FDI on retail, then she may consider. She has said that at the press conference. India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.